Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Jai Gaur Sitanath Pramanande Ma Om Vishnu Padaya Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschcha Desatarini Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं शिरोधा कृष्णपदं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. The last time I gave class here was in the basement. You were still there. That was like how many years? Maybe 2 years ago? Huh? Yeah? तो महाराज कह रहे हैं कि पिछली बार जो मैंने कक्षा दी थी वो बेसमेंट में जब जगन्नाथ जी थे तब दी थी, तो उसको लगभग 3 से 4 साल। The temple is like a work of art, very unique in ISKCON. I have not seen it. Traveled many places all over the world, but nothing like Rohini Temple. तो महाराज कह रहे हैं कि हालांकि मैं दुनिया में बहुत शहरों में गया हूँ और मैंने बहुत ISKCON मंदिर देखे हैं, लेकिन रोहिणी मंदिर जैसा कोई नहीं। It's like a museum of Krishna, of Radha Madhava. Yes. ये पूरा मंदिर जो है वो एक बहुत सुंदर अद्भुत राधा और कृष्ण के म्यूजियम के समान प्रतीत होता है। Yes. It'll be very difficult to replicate this or duplicate. किसी और स्थान पर किसी तरीके से बनवाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ऐसा बना। Well, Gurgaon is close, the one that we opened. Yeah, the same kind of like motif. Yeah. तो हमारे बता रहे हैं जो सेक्टर 45 में गुरुग्राम मंदिर है वो इसके नजदीक है, तो इस स्टेशन में भी बता रहे थे कि वो एक ही टीम ने जिसने रोहिणी मंदिर बनाया है, उन्होंने ये सेक्टर 45 का मंदिर बनाया। Same architect, same interior designer, Rasapriya Prabhu, right? Yes. Yeah. Vedas. And Vedas. Vedas is final authority to sanction. Okay, this is fine. This is fine. I'm sure Guru Maharaj must be very happy with that new temple opening. तो राष्ट्रीय प्रभु और वेदव्यास प्रभु का एक जोड़ी था जिसने उस मंदिर की भी सारा कार्य संभाला। वेदव्यास प्रभु जो है वो आखिरी अथॉरिटी होती थी कुछ चीज का भी साक्ष्य करने के लिए। हमारा बता रहे हैं कि परम पुरुष ने गोपाल कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, इतना सुंदर और भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। Transcendental theme. Huh? ये एक आध्यात्मिक जोड़ी है इन दोनों भक्तों की सुंदर सी बात है। Reading from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela,
chapter 7, Lord Chaitanya in 5 features, text number 53. हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में से आदि लीला अध्याय संख्या के साथ व्यास संख्या है 53। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asi nivedana kare charane dariya. Asi nivedana kare charane dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Asi nivedana kare charane dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Somebody else. Asi nivedana kare charane dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Asi nivedana kare charane dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Asi nivedana kare charane dariya. Mataji's. Asi nivedana kare charana dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Asi nivedana kare charana dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Asi nivedana kare charana dariya. Eka vastu magam deha prasana iya. Word for word meaning, you can say it in Hindi. शब्द आसी Ashi, वहाँ निवेदन Nivedan, निवेदन Nivedan, करे Kare, किया चरणे Charane, चरण पकड़ों को Charan, धरिया Dariya, पकड़कर एक एक Ek, वस्तु Vastu, वस्तु Vastu, मांगो Magho, आपसे मांगता हूँ देकर कृपया मुझे दो प्रसन्न प्रसन्न हो हैया हो Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. The Brahmana immediately fell at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and requested him to accept his proposal in a joyful mood. अनुवाद वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि वह प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करे। Purport. I will say the whole purport. Okay. The Vedic injunction state
Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. One must approach a superior authority in humbleness. Bhagavad Gita, chapter 4, text 34. One cannot challenge a superior authority, but with great submission, one can submit his proposal for acceptance by the spiritual master or spiritual authorities. Sri Chaitanya Mahaprabhu is an ideal teacher by his personal behavior, and so also are all his disciples. Thus, this Brahmana, being purified in association with Chaitanya Mahaprabhu, followed these principles in submitting his request to the higher authority. He fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and then spoke as follows. तात्पर्य वैदिक आदेश है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मनुष्य को अपने गुरुजन के पास विनीत भाव से जाना चाहिए। भगवद गीता 4:34। अपने से बड़े गुरुजन को ललकार कर नहीं जा सकता। प्रत्युत अत्यंत विनीत होकर गुरु अथवा वरिष्ठ जनों के समक्ष अपना सुझाव रखा जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आसन से आदर्श शिक्षक हैं और उन्हीं की तरह उनके सारे शिष्य हैं। इस तरह इस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु संगति से शुद्ध होकर इन सिद्धांतों का पालन करते हुए उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और इस तरह Hare Krishna. So, this is the continuation of the Brahmana who came to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi. ये जो प्रसंग है ये प्रसंग उसी को आगे बढ़ाते हुए है जो कि ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में भेंट करते हैं। At that time, Varanasi is full of Mayavadis, different than the Vaisnavas. Mayavadis means they believe that everything is the result of mode of ignorance, Maya. तो वाराणसी में अधिकांशतः मायावादी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं वैष्णव के मुकाबले। मायावादी का मतलब होता है सोचने हर चीज माया है जो कि तमोगुण से है। And still at this time, Varanasi is full of Mayavadis. और आज भी वाराणसी जो मायावादियों से भरा हुआ शहर है। This is the main reason why Srila Prabhupada came to the West to dispel this ignorance that everything is the result of Maya and Sunyavadi. Nirvisesa Sunyavadi Paschacha Desatarine. इससे श्री प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत गए तो उन्होंने इसी सिद्धांत का खंडन किया निर्विशेषवाद और शून्यवाद। So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. He was a grihastha up to the age of 24, and on the verge of coming to the age of 25, he took sannyas. And to trick the Mayavadi, he took sannyas from Mayavad sannyasi. श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल तक गृहस्थाश्रम में रहे और लगभग जब 25 साल के हो गए उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और मायावादी सन्यासियों को छल करने के लिए उन्होंने संन्यास भी एक मायावादी गुरु से ली। But the mantra that was given to him, the sannyas mantra, also came from Lord Chaitanya Mahaprabhu. और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि जो संन्यास मंत्र था वो उन्हीं के द्वारा उनको गुरु को दिया गया और उनके गुरु से उनको प्राप्त हुआ। So चैतन्य महाप्रभु से ही the story goes that Lord Chaitanya Mahaprabhu would like to go to Vrindavan. So on the way to Vrindavan, he passed by Varanasi.
चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो वाराणसी से होते हुए वृंदावन गए। And along the way, when he stopped there, he was being criticized by the Mayavadi sannyasis that he's very sentimental because the Mayavadi sannyasis, their main objective is to study the Vedanta and speculate. And ultimately, the result is that everything is Maya. तो जब वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो मायावादी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से खुश हुए क्योंकि उनका मानना है सन्यासी का मुख्य धर्म है वेदांत को पढ़ना और मानसिक जो है चिंतन करना उस वेदांत अध्ययन पर। So they were ridiculing, they were criticizing Lord Chaitanya Mahaprabhu because they have never seen a sannyasi who is always engaged in chanting and dancing. ये जो मायावादी सन्यासी थे ये चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, भर्त्सना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सन्यासी नहीं देखा था जो निरंतर हरि नाम का कीर्तन कर रहा है और नृत्य कर रहा है। What's the name of his sannyas guru? Keshav Bharati. So they were surprised that they also, hey, you belong to our kind of line of lineage, but we never saw a sannyasi who's always engaged in chanting and dancing. What is this? You should come with us and study the Vedas. तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी संन्यास शिक्षा केशव भारती से की है, तो आप भी हमारी परंपरा से ही हैं, तो आपको ये नाचने की क्या आवश्यकता है, आप हमारे साथ आकर वेदांत का अध्ययन करें। So there were these two Vaishnavas whom he stayed and always be with them, Tapan Mishra and Chandra Shekhar. So they cannot tolerate the blasphemy of the Mayavadis towards Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu, for him, he will just smile. चैतन्य महाप्रभु मतलब दो वैष्णवों के साथ रहते थे, तपन मिश्र चंद्रशेखराचार्य, तो उनको चैतन्य महाप्रभु की निंदा सहन नहीं हुई क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने निंदा सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। So this is the proper etiquette. If someone criticizes oneself because he is a devotee of the Supreme Lord, he is free from the bodily concept, he will not mind. But other Vaisnavas, they will not tolerate. They have to defend the other Vaisnava whom he will consider himself as deserving to be criticized, and for him he doesn't mind, but other devotees should defend the other Vaishnava who's being criticized and blasphemed. तो इससे सही वैष्णव शिष्टाचार है कि अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें जो है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे वैष्णव जब देखते हैं कि किसी वैष्णव की निंदा हो रही है या उनकी बुराई कर रही है तो उनको उस निंदा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। But the tendency of a neophyte devotee is that a little bit of criticism towards him, he will immediately retaliate and also tit for tat. He will also blaspheme or verbally he will fight that person who's criticizing him. But an advanced devotee, he will not mind. He will not say anything. This is proper etiquette, Vaishnava etiquette. He will not become angry. एक नया भक्त जो है अगर उसकी कोई निंदा करता है तो वो क्रोधित हो जाता है
और पलट के वो भी निंदा करता है, बुराई निकालता है। लेकिन जो भक्ति उन्नत है वो क्रोधित नहीं होते, वो अपनी निंदा को सहन करना सीखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, पलट के विरोध नहीं करते। It says in the purport, one of the purports by Srila Prabhupada here, that if one hears a blasphemy of another devotee, he should be prepared to defend that devotee and even lay down his life, give up his life. And if he cannot do that, he should walk away. शिल प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य बताते हैं, तो इस बात की निंदा हुई दूसरे भक्त को उसका विरोध करना चाहिए। अगर विरोध ना करे तो शास्त्र बताते हैं कि उसको प्राणों को त्याग देना चाहिए। अगर वो दोनों नहीं कर सकते तो उसको स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। So at that time, a Brahmana came to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu and to ask him to request Lord Chaitanya Mahaprabhu to have prasadam at his place. उसी समय एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास आए, चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करना चाहता था कि घर पे प्रसाद मिले। So now, Prabhupada quoted the purport here in the purport that this is the proper Vaishnava etiquette also. A student, when he approaches more elevated or advanced devotee, he should approach him in a humble way. It's mentioned in the Bhagavad Gita. शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कोई शिष्टाचार बता रहे हैं कि जब एक भक्त अपने वरिष्ठ भक्तों से मिलता है तो उसको बहुत विनीत होकर अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। और शिल प्रभुपाद जी गीता में से उद्धृत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी इस शिष्टाचार को गीता में वर्णन करते हैं। A very famous verse, Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadakshanti jnanam jnanena tattva darshina. This verse is very important, especially for those who wish to make advancement in Krishna consciousness. One must approach a bona fide spiritual master in a humble state of mind, inquire from him, and render service unto him. He should be submissive, just like this Brahmana who came to request Lord Chaitanya Mahaprabhu to take prasadam at his place. बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक प्रमाणी गुरु की शरण लेनी चाहिए। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि प्रमाणी गुरु की शरण लें और बहुत विनीत होकर विनम्रता से उनकी सेवा करे और उनसे प्रश्न पूछे और इसी रीति से गुरु की आगे बढ़े। And in this sloka, there are three words that are very, very important. Paripatena or paripat, pariprasnena, and sevaya. That means with submission, inquiry, and service. तो इस श्लोक में तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया, कि उसको एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर नतमस्तक होना चाहिए और उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी विनम्रता सेवा करनी चाहिए। So the first one is pranipat. That means giving up one's false ego. If one wants to learn the truth from bona fide spiritual master or more advanced devotees, then he should give up his false ego, thinking that I am better than you, or I am more knowledgeable than you, or I know better than you. So what is the use? What is the need of approaching a more advanced devotee? तो पहले शब्द है प्रणिपात, इसका मतलब ये है कि अपना झूठा अहंकार को त्यागना या ये विचार को त्यागना कि मैं ज़्यादा अच्छा जानता हूँ या ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अगर कोई ऐसा समझता है तो फिर पुण्य गुरु की आवश्यकता ही क्या है, उनके पास जाने की और तो इस चीज़ को त्याग कर एक
के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए। Yeah, if one wants to inquire about the absolute truth, one should not do it in a challenging way. Sometimes, hmm, devotees also, they will ask questions to challenge the speaker. Uh, they know the answer already, just to be make sure that you know the answer. I know the answer, but if you say something wrong, I will tell you what is the answer. तो कभी कभी जो आध्यात्मिक प्रश्न जो है वो चुनौती पूर्वक नहीं पूछते। तो हम भक्तों के समाज में देखते हैं कभी कभी भक्त प्रश्न पूछते हैं, हालांकि उत्तर जानते हैं, लेकिन वक्ता को उत्तर पता है नहीं पता, उसको जानने के लिए वो चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। Of course, सही भावना नहीं। a genuine devotee will not ask a challenging question. They will always be in a humble state of mind. But many conversations of Srila Prabhupada, when he would be speaking with some Indians or scholarly personalities, they will ask challenging questions. And then Prabhupada says, I am not your servant. You came here to learn, so don't speak. He will tell this also to Mr. Patel. You know, morning walks in Mumbai. Listen. And then Mr. Patel or Dr. Patel is Dr. Patel. Then he will humbly, okay, you're my Guruji, you're my Guruji. तो तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा रहता था, खासकर जो भारतीय होते थे श्रील प्रभुपाद से वो चुनौतीपूर्वक प्रश्न पूछते थे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जो शिरडी के प्रभुपाद जो सैर करने जाया करते थे, तो उस समय जो वार्ता होती थी तो उसमें डॉक्टर पटेल होते थे, तो वो श्रील प्रभुपाद से बात करते थे। कई बार प्रभुपाद को उनको चुप रहना पड़ता था, ये बोलना पड़ता था कि मैं तुम्हारे सेवक नहीं हूँ, तुम पहले सुनो, तुम्हें हम सीख नहीं है। तो फिर डॉक्टर पटेल विनम्र हो जाते थे, बोलते थे कि जी आप मेरे गुरु हैं, तो आप बताइए मैं सुनूँ। Yeah, if you hear the conversations in Mumbai, in the Juhu beach, this Dr. Patel, he knows so many slokas. Even before Prabhupada will speak, Dr. Patel will immediately quote the sloka. Huh? So when we ask question, it is for us to learn and realize the answer, not to question the question that we ask. तो खासकर मुंबई में जुहू बीच में अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की वार्ता सुबह की सैर के समय सुनेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर पटेल का श्रील प्रभुपाद जी के साथ ऐसे कई वार्ता है। और ऐसा देखा जाता था कि डॉक्टर पटेल कहीं श्लोक जानते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी को चीज बता रहे होते थे, तो प्रभुपाद जी को बताने से पहले वो श्लोक को उद्धृत कर दिया करते थे। When we ask question, तो इसका मतलब ये है कि जब हम वरिष्ठ सुने तो हम प्रश्न सीखने के सुने, प्रश्न वक्ता के प्रश्न को भाग नहीं। yeah. When we ask question, it should be how to dispel our doubts and also for the benefit of others. Like Sukadev Goswami, when Parikshit Maharaj will ask the question, it is not just for himself, it is for the benefit of everyone, especially in Kali Yuga. तो हमें जब प्रश्न पूछना चाहिए वो अपनी जिज्ञासा के उत्तर को प्राप्त करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए पूछना चाहिए। जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित सिर्फ अपने लिए नहीं, जन साधारण के लिए प्रश्न पूछा करते हैं। I know our Guru Maharaj, he will always want that there is some questions at the end of the class. If at the end of the class there is no question, there are only two things. Either everyone understood everything that was said, or they didn't understand anything.
तो परम पुरुष ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बड़ी पसंद करते थे कि कक्षा के बाद हम लोगों से प्रश्न पूछे, क्योंकि अगर कक्षा के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछता है इसका दो ही मतलब है, एक हर व्यक्ति को हर चीज पूर्ण तरीके से समझ आ चुकी है या किसी को कुछ भी समझ नहीं। So that is pariprasnena. Pariprasnena means we should be sincere. Relevant questions should be there for the benefit of everyone. तो परिप्रश्न का मतलब है हमें जो है वो उचित प्रश्न पूछने चाहिए हर किसी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। And for us to ultimately get the benefit, we should also serve those who are advanced devotees, inquire from them submissively, and because they have realized the truth, they can impart the knowledge. So when we serve them, it has more impact, cleanses our heart, and any doubts will be also dispelled. तो सिर्फ प्रश्न पूछना काफी नहीं है, हमें जो हमारे वरिष्ठ होते हैं उनकी सेवा भी करना चाहिए। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारे देश शुद्ध हो जाता है और हमारे जितने भी संदेह हैं दूर हो जाते हैं सिर्फ सेवा करने के माध्यम से। So obedience is there in the very beginning. In the beginning and in the end. The disciple or those who wish to understand the absolute truth, obedience and humility from the very beginning, in the middle, and in the end. Obedience and humility. तो आज्ञा का पालन करना और विनम्रता ये भक्ति के शुरुआत में, मध्य में और अंत में हर स्तर पे आवश्यक है भक्ति में प्रवृत्ति करनी। जो हमें आज्ञा मिलते हुए उनसे हम उसका सही तरीके से पालन करें और हमेशा विनम्र भाव में स्थिर रहें। So many examples also in the Shastras that explains the position of a student or a devotee who wish to further make advancement, would like to make advancement in Krishna consciousness, like Arjuna, Shishyasteham. Yeah, he says, now I surrender unto you. शास्त्रों में से बहुत उदाहरण है ऐसे भक्तों का जिन्होंने इस गुणों को अपने जीवन में अपनाकर भक्ति में प्रगति के लिए, जैसे अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा शिष्यास्ते हम साधिमानतम प्रबलम कि मैं आपका शिष्य अपने आप को स्वीकार करता हूँ, आप मुझे सिखाइए। Or Parikshit Maharaj towards Sukadev Goswami for 7 days with humility, submission. He is the king. He is the emperor of the world, and he asked Sadhu, Sukadev Goswami, constantly asking questions relevant for him and for the rest of the world in Kali Yuga. And he was serving him by hearing. Hearing is serving. Sravanam Kirtanam. Yes. दूसरा उदाहरण हम राजा परीक्षित का देखते हैं। राजा परीक्षित देखिए पूरे पृथ्वी के राजा, लेकिन वो बहुत ही विनम्र भाव से एक ऐसे साधु सुखदेव गोस्वामी जी शरण लेते हैं और विनम्र भाव से, हालांकि वो विश्व के सम्राट हैं, लेकिन साधु के सामने विनीत भावना से जाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं जो पूरे मानवता के कल्याण है। Same with Vidura, asking questions to Maitreya. Relevant questions, respectful questions to receive the truth, the tattva, the absolute truth. तीसरा उदाहरण हम देखते हैं जो पूरे विश्व सबसे प्रसिद्ध कुरुवंश, उसके मुख्यमंत्री विदुर जी भी मैत्री मुनि के पास जाते हैं और ऐसे सही तत्व के प्रश्न पूछते हैं जो कि पूरे संसार के लिए प्रासंगिक हो, उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ। Or Dhruva Maharaj towards Narad Muni, because Dhruva Maharaj would like to have a kingdom better than his father. Yes?
So he asked Narad Muni, how can I find where is Lord Narayan? चौथा उदाहरण जो है वो ध्रुव महाराज का है। जब ध्रुव महाराज की माता के कहने पर भगवान की खोज में जाते हैं, उनको नारद मुनि बीच में मिलते हैं, तो नारद मुनि से विनम्र भाव से पूछते हैं कि नारद मुनि आप मुझे शिक्षा दीजिए कि भगवान श्री विष्णु कैसे प्राप्त किया जा सकता है। And because of Dhruva Maharaj's sincerity, Narad Muni imparted him the knowledge and the mantra, all the different tapasya, different austerities that he has to perform in order to have darshan of Lord Narayan. और नारद मुनि उनको बताते हैं इन सब तपस्याओं के बारे में, भक्ति के विषय में, जिनसे ध्रुव महाराज को भगवान श्री नारायण की प्राप्ति हो सके। So this is very important, this meeting of the Brahmana towards the having to request Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he took advantage of this. Can we read the next verse? Yeah? तो ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, और हम अगला श्लोक, अगला अध्याय जो है उसको ले सकते हैं। The next verse. Sakala sanyasi muni kaina nimantrana Tumi yadi aisa purna ayamuramana. Translation. My dear Lord, I have invited all the sannyasis of Benares to my home. My desires will be fulfilled if you also accept my invitation. धन्यवाद। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। यदि आप मेरे निमंत्रण स्वीकार कर लें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। Purport. This Brahmana knew that Chaitanya Mahaprabhu was the only Vaishnava sannyasi in Benares at that time, and all the others were Mayavadis. It is the duty of a grihastha or sometimes invite sannyasis to take food at his home. This grihastha Brahmana wanted to invite all the sannyasis to his house, but he also knew that it would be very difficult to induce Lord Chaitanya Mahaprabhu to accept such an invitation because the Mayavadi sannyasis would be present. Therefore, he fell down at his feet and fervently appealed to the Lord to be compassionate and grant his request. Thus, he humbly submitted his desire. ये ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री कृष्ण महाप्रभु ही एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे और अन्य सभी मायावादी थे। गृहस्थ का ये धर्म है कि वह कभी-कभी सन्यासियों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करे। ये गृहस्थ ब्राह्मण सारे सन्यासियों को अपने घर पर बुलाना चाह रहा था, किंतु उसे ये भी पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वहां पर मायावादी सन्यासी उपस्थित होंगे। अतएव उसने उनके चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि वह दया करके उसकी प्रार्थना स्वीकार करें। इस तरह विनीत होकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की। Yes, and ISKCON is the same, isn't it? The Grihasthas, they have the tendency to only invite the sannyasis at home. Grihasthas should also invite the brahmacharis at home. हम देखते हैं कि ISKCON में ऐसा प्रचलन है कि गृहस्थ भक्त सिर्फ सन्यासियों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनको ब्रह्मचारियों को भी आमंत्रित करके खूब खिलाना चाहिए। The invitation is for the grihasthas, for them to be purified
and also to inquire spiritual subject matters. Materialists, they will invite you at home to get rid of their karma. But devotees is not like that. Devotees may invite or should invite fellow grihasta, not just sannyasis, also brahmacharis, to have Vaishnava Sangha, Sadhu Sangha. This is one of the reciprocation, loving exchanges between devotees, offering prasad, accepting prasad, giving gifts, accepting gifts, revealing one's mind in confidence, and getting some relevant advice or giving knowledge, taking knowledge from those who are more advanced. तो जब गृहस्थ इस तरीके से सन्यासियों का अवलंबन करते हैं तो वो शुद्ध होते हैं और उनसे जिज्ञासा कर पाते हैं। कोई भौतिकवादी व्यक्ति आमंत्रण करता है अपने कर्म से मुक्त होने का, लेकिन जो भक्त हैं वो ऐसा नहीं करते। जो गृहस्थ भक्त है वो दूसरे गृहस्थ भक्तों को भी, सन्यासियों को भी, ब्रह्मचारियों को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये एक वैष्णव संघ है। और जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में कि ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति परिचिति भूते हो जाए जीव शक्ति प्रीति लक्षण। ये प्रीति का लक्षण है जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रसाद खिलाते हैं और उनसे धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये एक वैष्णव संघ का। Yeah, we've read also that the grihastas, before they eat, they would go out of their home, their house, and they will shout outside, "Is there anyone who's hungry? Anyone who's hungry around, please come. You can have prasada." That's Vedic culture, isn't it? Do we hear that nowadays? I don't think so. What's that? They call from outside Swiggy. Softly, right? तो महाराज कहते हैं कि वैदिक एक आदेश है कि जो गृहस्थ भक्त है उसको घर के बाहर जाकर जोर से ऐलान करना चाहिए कि कोई भूखा है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, 3 बार उच्चारण करना चाहिए ऊंचे स्वर में, और कोई आए तो उसको भोजन देना चाहिए। तो एक भक्त बता रहे थे कि लोग बाहर जाकर इसलिए नहीं बोलते हैं कि किसी को भोजन की आवश्यकता है, वो आवाज लगाते हैं कि स्विगी वाला आ गया या फिर केशव में बता रहे थे कि वो बाहर जाते हैं लेकिन बहुत मंद आवाज से बोलते हैं, लगे इतने आस्ते बोलते हैं कि किसी को सुनाई ना दे, और अपना धर्म पूरा करके वो वापस आके बढ़िया से प्रसाद लेते हैं। But Prabhupada made it possible. He says that within 10-mile radius of any ISKCON temple or center, no one should be hungry. That's why we have this Food for Life program, and it originated in Shri Mayapur. शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई। शिला प्रभुपाद जी ने मायापुर में शुरू किया और आदेश हर ISKCON मंदिर को दिया कि हर ISKCON मंदिर के पास इतना पर्याप्त मात्रा में प्रसाद बने कि मंदिर की 10 मील की दूरी तक भी किसी को प्रसाद की आवश्यकता है तो मंदिर में आके प्रसाद ले सकते, और ये मायापुर नाम से शुरू। So yes, the grihastas may not have time to go outside and ask everyone if there's anyone who's hungry, so they should support the Food for Life program of ISKCON or the midday meal. So we will distribute prasad for you. तो एक घर के लिए मुश्किल हो सकता है कि बाहर जाकर ये बोले कि अगर आप कोई भूखा है तो मेरे पास आके प्रसाद ले सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि मंदिर में जो एक कार्यक्रम है जिसमें प्रसाद का वितरण होना है उसमें सहयोग दे सकते हैं, और उनके तरफ से मंदिर से सब लोगों को प्रसाद देते हैं। So this is the mystery here. Lord Chaitanya Mahaprabhu is passing by Varanasi on the way to Vrindavan. So he took sannyas from a Mayavad sannyasi, and then here he will accept also even though
we're not supposed to associate with Mayavads. Hmm? Prabhupada would say also, if he is being invited, let's say there's a big samela or assembly of sadhus, because Mayavad sannyasis are also sadhus. But if we are not there being invited and we are not going to speak, he will not come. But here, Lord Chaitanya Mahaprabhu is being invited by a Brahmana, Vaisnava, to give his association to these Mayavadi sannyasis. It's like a trick, transcendental trickery. Lord Chaitanya Mahaprabhu. He will do like Lord Krishna, he will perform one pastime, but many things will be also accomplished at the same time. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is like that. तो जब जितना वो बनारस गए तो हालांकि शिष्टाचार ये है कि मायावादी साधुओं को पसंद नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी को मेले में बुलाया भी जाए, सम्मेलन में बुलाया भी जाए, जब तक श्री प्रभुपाद जी को बोलने का मौका नहीं मिलता था, वैष्णव सिद्धांत की चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, श्री प्रभुपाद जी नहीं जाते थे किसी ऐसे मायावादी संधि में। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया कि उनकी एक आध्यात्मिक इच्छा को कर रहे थे उन मायावादी सन्यासियों को भक्ति में लाने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को लीला करते हैं तो एक लीला से उनके बहुत सारे कार्य जो है वो पूरे हो जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपनी इसी लीला से बहुत सारे अपने कार्य संपन्न करते हैं। So this is the mood of the Lord. This should be also our mood. And in the next verse, one of the line there says, Vaisnava is as hard as a thunderbolt and as soft as a rose. तो हम भी चैतन्य महाप्रभु से सीख सकते हैं प्रचार की शैली। और अगले ही प्यार के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव कभी कभी वज्र के समान कठोर भी होता है और एक गुलाब के समान कोमल होता है। As hard as a thunderbolt means Vaisnava never compromise his principle. He never deviate from the Siddhanta. But for the benefit of others, he will go out and preach. Just like now is marathon time. Now the comfort of being in a very beautiful temple like this has to be given up. We should go out and distribute Srila Prabhupada's books for the benefit of the conditioned souls, so they'll be given an opportunity to go back home, back to Godhead. तो वज्र समान कठोर होने का मतलब ये है कि भक्त कभी भी अपनी निजी भक्ति में नियम में कभी ढिलाई नहीं देता और गुलाब के समान कोमल होने का मतलब ये है कि ये जो समय है श्री प्रभुपाद जी का दिसंबर मैराथन का समय है, तो हमको क्या करना चाहिए? बाहर जाना चाहिए, दूसरे लोगों को भक्ति में लाने के लिए ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। Prabhupada says, in the early days, everyone should go out and distribute books during the marathon. Only the pujari shall remain in the temple to do the artik. Everyone should go. श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दिसंबर मैराथन के समय पर सबको बाहर जाना चाहिए, सबको बाहर जाना चाहिए, सिर्फ पुजारी को रुकना चाहिए भगवान की आरती करने के लिए, अन्यथा सभी मंदिर के निवासी भक्तों को बाहर जाकर के काम करना। Yesterday we did a yagya, auspiciousness, for the book distribution marathon in Delhi. And officially, the marathon will start on the 15th of November. तो कल इस्कॉन दिल्ली में एक यज्ञ संपन्न किया गया श्रील प्रभुपाद जी की मैराथन और छुट्टी के से करने के लिए, और औपचारिक रूप से 15 नवंबर से श्रील प्रभुपाद जी का मैराथन शुरू हो गया। Delhi NCR pledged 4.6 lakhs books, Bhagavad Gita's Krishna book, to be distributed in this month of Prabhupada book marathon. बड़ा मंदिर ने 4,60,000 किताबों का वितरण करने का एक व्रत
We should reclaim the throne because Delhi used to be number one. But actually, Delhi is number one throughout the whole year. But Mayapur, Mayapur also. But we should reclaim the throne to be the number one. Guru Maharaj's zone is always number one all over the world in book distribution marathon. तो दिल्ली मंदिर को प्रयास करना चाहिए कि इस डिसेंबर मैराथन में वो उस जो हर साल दिल्ली मंदिर को पहला स्थान मिलता था उस स्थान को पुनः प्राप्त कर पाए। हालांकि दिसंबर मैराथन में मायापुर मंदिर जो है वो सबसे आगे रहता है, लेकिन पूरे साल भर दिल्ली मंदिर रहता है। और अधिकांश देखा जाता था कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वयं महाराज के जितने भी क्षेत्र हैं सारे मंदिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे आगे रहता है। दिल्ली मंदिर और कृष्ण स्वयं के उस पहले स्थान को फिर से प्राप्त करने का वो जोर शोर से प्रयास। I remember one year it was in Mayapur, a book distribution award ceremony in front of Sri Radha Madhava. So that year number one is Delhi. So the Sankirtan devotees, especially Japatak Maharaj, His Holiness Japatak Swami Maharaj, the devotees, they ask the blessings from Guru Maharaj that Mayapur to be the number one next year. Guru Maharaj blessed them. So the next year, Mayapur became number one in book distribution. एक बार ऐसा हुआ था कि मायापुर में राधा माधव जी के समक्ष जब वो डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड हुआ तो दिल्ली मंदिर पहले स्थान पर आया। तो परम पूज्य जगन्नाथ महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि अगर आप पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सब भक्त लोग महाराज के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि अगले साल हम आपके ही मंदिर दिल्ली मंदिर को पीछे छोड़ दें। मायापुर मंदिर या आपका ही मंदिर है, दोनों जगह क्या चीज है तो मायापुर मंदिर फर्स्ट आ सके। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ और अगले साल मायापुर मंदिर This is the Shakti of pure devotee. Everything becomes fulfilled. Whatever he touches becomes fully bloomed, blossomed in Krishna consciousness. तो ये एक शुद्ध भक्ति शक्ति है कि वो जो इच्छा करते हैं आशीर्वाद देते हैं वो फल देते हैं। So Maharaj ji would like to also beg blessings from His Holiness Gopal Krishna Swami Maharaj so that ISKCON Rohini also can someday To be number one? to be number one in the whole world. Why not? You should shoot for the what? Not shoot for the rhinoceros. That's not the right word. But you should shoot for the stars. तो मैंने कहा कि हम भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वयं महाराज के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वो अपना सीम आशीर्वाद ISKCON रोहिणी के भक्तों को दें कि एक दिन ऐसा जरूर वो आए, वो सुनहरा दिन आए जिसमें ISKCON रोहिणी पूरे विश्व भर में किताबों के नंबर वन की पोजीशन में आए। They ask the same blessings in ISKCON Silicon Valley in California, temple of where His Grace by Seshika Prabhu belongs to. And they ask Guru Maharaj also for their temple to surpass Delhi in book distribution. ISKCON सिलिकॉन वैली में भी जो कि इस वैशिष्टिका प्रभु के अंतर्गत वो मंदिर चलता है, तो उन्होंने भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से ऐसे ही आशीर्वाद मांगा था कि ISKCON सिलिकॉन वैली भी दिल्ली मंदिर को पीछे छोड़ सके। But they're number one in US. Yes. ISKCON सिलिकॉन वैली जो है वो यूएस में नंबर वन हमेशा रहता है। No one can beat India
is unimaginable. The books has been distributed here, lakhs and lakhs. Other temples would take many, many lifetimes to distribute that many books. तो दिल्ली में जो ग्रंथों का वितरण होता है उसका कोई मुकाबला नहीं, लाखों लाखों ग्रंथ वितरित होते हैं इन सब उन्नत वैष्णवों के आशीर्वाद से। तो बहुत सारे मंदिरों को कई जन्म लगेंगे इन मंदिरों के नजदीक आने में। Okay, we stop here now. Yes? Is there any question or comment? So Maharaj, one. Okay. So Maharaj, one question, one little Comment? information. Okay. One question, Maharaj, that how we can genuinely cultivate always, just like we see that even great stalwart devotees sometimes come under the influence of pride, like Indra or Brahma. Okay. So the question is that how we can always safeguard ourselves from this demon of pride and continuously practice humility. It's not easy. Yes. Another few words is very difficult. So how we can cultivate always that mood of being servant of the servant of the servant. That's the question. So मेरा प्रश्न महाराज से मैंने कहा महाराज एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जानकारी एक कमेंट आप सब लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये था कि हम देखते हैं कि बहुत उन्नत व्यक्तित्व भी कभी कभी अहंकार के वश में आ जाते हैं, जैसे भागवतम में है इंद्र जो सभी देवताओं के राजा हैं, हम चैतन्य चरितामृत में वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ते हैं जो कि उनको भी महाप्रभु के नाम से कई जगह उनकी बैठक है, कभी कभी हम ब्रह्मा जी का नाम सुनते हैं। तो हम कैसे अपने आप को इस अहंकार के असुर से कैसे हम अपने आप को हमेशा बचा सकें और इस श्लोक को अपने जीवन में अपना सकें, त्रिनादवी श्लोक जो कि बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। ये प्रश्न मेरे मन से पूछा। One, not to fall into this illusion that I'm the doer, I'm the enjoyer, I'm the proprietor. This is all false ego, due to false ego. Not to fall prey of becoming proud is to have not always be surrounded by juniors. That's why in ISKCON, some of our spiritual masters also, they fell down. Sannyasis fell down because of becoming proud, becoming ensnared by Maya, is to not have always surrounded by juniors. One should be having a relationship with equal. Better is that we have always looking up to someone whom we can put our faith and reveal our mind if we are having some problems. तो महाराज बता रहे हैं कि हम भी कर्ता भावना से, भोक्ता भावना से कैसे उस खाई में गिरने से अपना को कैसे बचा सकते हैं, कि हमेशा जो हमसे कनिष्ठ हैं हमेशा उनका संग न करें। क्योंकि अब देखिए इस्कॉन के इतिहास में भी ऐसा बहुत हुआ है कि इस्कॉन के कई सन्यासियों का भी पतन हुआ है और इस्कॉन के कई गुरुओं का भी पतन हुआ है। तो माया बहुत शक्तिशाली है। तो मान बता रहे हैं कि हमें हमारा संबंध हमारे साथ वाले लोगों के साथ नहीं, और सबसे अच्छा ये है कि हमारे हमसे कोई वरिष्ठ जिन पे हम श्रद्धा रख सके, जिनसे हम अपने मन की बात कर सके। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हम उसको छुपाए नहीं, हम अपने वरिष्ठ वैष्णव से मन की बात को रखकर हम उनसे परामर्श ले सकें। And this is my advice to my God siblings, dear God siblings.
Now that our Guru Maharaj is not here physically amongst us, we should not become independent, thinking that I know what I'm doing. We should always look up to someone who is senior to us, who are more realized than us, and get advice from them. There'll come a time that if one will not have that kind of mood, one will make a big mistake. And that will be the cause of one becoming into illusion, into Maya. I am seeing now a little bit of these signs, and this is very dangerous. For me, before I go somewhere, I have to ask someone permission. I don't go. A sannyasi is free to go anywhere and everywhere, but I don't do that. Even to go to Loy Bazaar, I have to tell someone I'm going to Loy Bazaar. Number one was that the poison. Prabhupada says the only poison that will break us is that personal ambition. One should not have a personal ambition. Our ambition is to be Krishna conscious, yes. But for our own material benefits, that will destroy our bhakti. That will cripple our bhakti. तो महाराज कह रहे हैं कि हम सभी गुरु भाइयों से और गुरु बहनों से प्रार्थना करना चाहते हैं। अब हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं परम गुरु गोपाल कृष्ण समाज हमारे बीच में दिवाली कुछ नहीं है, तो हमें स्वतंत्र नहीं बनना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि अपने समझता हूँ कि मुझे क्या करना है, हमें किसी के आगे रहना चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि मैं भी हालांकि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी कहीं पर भी स्वतंत्र है जाने चाहिए, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो किसी से पूछ के किसी को बता के जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं लोही बाजार भी जाता हूँ, किसी को बता के जाता हूँ लोही बाजार जा रहा हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी भक्ति का एक बहुत बड़ा जो शत्रु है वो स्वार्थी होना है। क्योंकि अगर हम अपने स्वार्थ के लिए भक्ति में कार्य करते हैं तो हमारी भक्ति को रुग्ण कर देगा, हमारी भक्ति को लाचार कर देगा और हम बहुत भारी गति करेंगे और बहुत। We should not have any personal agenda. हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी। Our only agenda is to serve Hari Guru and Vaishnavas. हमारी एक ही हमारा ध्येय है कि हम हरि गुरु वैष्णवों की सेवा कर सकें। Then we will always be safe. We will always be protected by Lord Nisinghadev. ना हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे और वही सुरक्षा कौन करेंगे? स्वयं भगवान नरसिंह देव। Okay. One comment. तो आपसे बात को जानने की खुशी होगी। कल ही हमारी एक काउंसिल मीटिंग थी और वहाँ पर केशव ने इस्कॉन रोहिणी का आप सबको जान के आज सबको जान के बहुत खुशी हुई कि कल हमारी मीटिंग थी और इस्कॉन रोहिणी की तरफ से केशव ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट लिया, जो कि हम जो प्रबंधन की तरफ से हैं आप सब से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो टारगेट डिस्काउंट रोहिणी दिया है कम से कम उसको हम प्राप्त भी कर सके, उसके आगे जा सके। और आप सब खुशी होगी कि डिस्काउंट रोहिणी ने 25,000 बुक्स का टारगेट लिया है। 50,000 Mahabig books. Jai. So 25,000 महावीर बुक्स का टारगेट डिस्काउंट रोहिणी ने दिया है। तो हम आप सभी लोग कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस 25,000 टारगेट को बांटें, हम सब अपना अपना टारगेट लें और हम सब मिलकर एक समुदाय मिलकर डिस्काउंट रोहिणी, श्रील प्रभुपाद
परम पुरुष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की प्रसन्नता के लिए ये टारगेट को अचीव करके इसको सरपास करके उनको भेंट करें इस दिसंबर मैराथन। हालांकि टारगेट देखने में कम है, लेकिन हमारे मंदिर में ऐसी अभी यही स्थिति है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे पड़ोस में जो मंदिर है स्वामी पंजाई बाग, उन्होंने पिछले साल 3.5 लाख से ज्यादा किताबें की। तो वो हमारे लिए सितारा है, तो कभी ना कभी हमें वहां से पहुंचना है। लेकिन अभी हमारी स्थिति है 25,000 किताबें करनी है। तो मेरे आश्रय भक्तों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे ये कार्य करना संभव नहीं है। तो आप सब प्रभु जी जो है जाएंगे अलग अलग क्लासेस में, युवा होगा और सभी भक्तों को ये टारगेट दिया जाएगा। तो आप सब बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा और हम सब मिलकर इस टारगेट को श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बीच में ये सुनकर एक क्रांति लाने के लिए भक्त जो है वो आप सबके बीच में टारगेट देंगे और वो टारगेट को पूरा करेंगे, चाहे उनको भी जान के जान की बाजी लगाकर भी टारगेट को पूरा करेंगे। तो आप सबको जानकर खुशी होगी कि प्रसन्न गौर प्रभु ने अग्नि पे हाथ रखकर ये व्रत किया है कि दिसंबर मैराथन में मैं 5100 महाविभूष So Maharaj is taken go in the 25,000 target, we will do 5,100 books. Yeah. So I request you to take your Mahakalin as a blessing to him. Okay. To empower him to achieve this target. जोधा करता ध्वनि से वो जो है इस 5,000 बुक्स का टारगेट को पूरा कर सके, उनको गुरु परंपरा शक्ति प्राप्त हो। और दूसरे भक्त जो कि अग्नि में दोनों हाथों को रखकर प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, और वो है हमारे बीच में इस देश महीना था और टारगेट ले रहे Sarbadri Prabhu, you have any message to give to them? तो आपको जानने की खुशी होगी कि महीना धाम को कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों को बाजी देकर 3100 महाविभूष तो 31 महाराज प्लीज ब्लेस हिम। So महीना धाम taken a vow. Give it to give it He's to taken a vow to give it to Prabhu, Sarbadri Prabhu, to offer to him. तो प्रसन्न प्रभु जी के चरणों में गिर के आप विनीत भावना से आशीर्वाद दीजिए। तो अगला टारगेट दे रहे हैं भानु गौर प्रभु और वंदन गौर प्रभु कि अपना खून और पसीने को एक बनाकर वो जो है प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा के लिए अपने भाइयों के साथ और अपने पूरे भक्ति विषय को जोड़कर कितने किताबों का व्रत दे रहे हैं, दोनों मिलाकर 1500 के लिए और अभी शॉर्ट होगा। तो सर्वे के सामने आकर तो ये हमारे सारे खड़े होइए। प्रभु जी की लीड कर रहे हैं, तो प्रभु जी ने 1500